clap. Hi people, how are you? So, our rituals. पहले मैं clap करूँगा फिर तू clap करेगा. I did already. Okay. I don't know how much of you guys have come again after watching the first episode. And yeah, we're glad if you're back again. If not, if this is your first time, then I request you people to go back again. Was the first episode, right? Yep. This is our second episode, by the way. Yeah. So, what is it about, Vritant? मेरे को decide करना था. Oh, you are the deciding person. ठीक है. Why did we start this? Oh. Why are we doing what we are doing? This is always a question. हाँ. इसका तो क्या ही जवाब हो सकता है? बता जवाब. जवाब तो we are a couple of nerds, if you can call it, filmmaking. But ऐसा टैग नहीं लगाना है कि भाई not only just we do filmmaking, not no. know it all, right? And we are always learning. I hope we always keep learning. I always want to learn. So basically what we are going to talk about today in this episode is I know it's a very broad topic, but still I'll address it. What is filmmaking? That's the topic of today's episode. And yes, this is what it is going to be from now onwards. We will be talking about just filmmaking. Yes, of course, we will explore other topics other than filmmaking, but then we will eventually come back to the topic of how everything is related to filmmaking and why we consider this as an art which is very expressive in all terms, right? So just to give you an example, filmmaking for me is a collaborative process where every people of different thought processes, different perspectives come together and they make just one thing. Yes, to work on one thing. That's a good thing. I think. Just to bring those people in one thought that itself is an art. It's a film ऐसा. मेरे लिए तो बहुत ही ऐसा इंट्रीगिंग था फर्स्ट टाइम जब लास्ट ईयर वी शॉट अ फिल्म आई वाज नॉट इन द मेजर पार्ट बट ही वाज इन द मेजर पार्ट ही वाज असिस्टिंग दैट मूवी असिस्टिंग द डायरेक्टर क्या नाम था उस मूवी का सो नाउ द मूवी इज गोइंग टू बी आउट by this time it is already we have announced this hopefully so the name of the movie is Hu Iqbal. It is a Gujarati movie and I am non-Gujarati, okay? I am Maharashtrian. My name is Vritant Jagtap and he is Vivek Sankhwal. I am also not Gujarati. But yeah, this is what our fate has come down to, and we are working in a Gujarati film, and hopefully he will be working with us from the projects now on. Hopefully, fingers crossed. And that's what. Yeah. So the name of the movie is Hu Iqbal. It's of course a Gujarati movie, and it is something new. Which you अरे यार ये तो सारा सा और एक घिसा पीटा डायलॉग हो गया है कि हर बार कोई आता है बोलता है we are doing something new. No objection or no कुछ सा. We are just learning. ये मस्त है. We are learning. ठीक है. हम सीख रहे हैं भैया हमको कुछ मत बोलो. Don't judge. Don't judge. You can't judge us on this. So basically so filmmaking is what we are here for. The Spiral project is all about the love of filmmaking and the art forms basically. The art form, yes. So basically in this thing we'll just discuss about what my experience was in the first project that I did. Okay. So मैं experience share करूँगा and I want this to be as a log of what I have done and I just want to share my experience so that down the line when I would want to come back to my roots, so maybe this video will help me do that because I love the fact that you can just go back to what you did once. One more thing I think that there's when you're initial into filmmaking you're innocent ऐसा मतलब I've heard this before from different directors also कि पहले तुम बहुत इनोसेंटली काम करते हो चीज़ों के लेके फिर बाद में यू बिकम मोर ऑफ मनी ओरिएंटेड पर्सन आई डोंट वांट टू मनी ओरिएंटेड बट पर वो बच्चे वाला पर्सपेक्टिव चले ही जाता है वो इनोसेंस चला जाता है मूवी बनाने का जो इनोसेंस होता है ना कि ये भी लेंगे
और बाद में तुम कट कर देते हो उन चीज़ों को ऐसे लाइफ के साथ के अब मैच्योर हो गए ये हटा देते हो मैच्योर हो गए बट आई थिंक वो इनोसेंस बहुत ज़रूरी होता है ऐसा हमेशा रहना ही चाहिए वो तो चिपका के और उसी के साथ मूवी बनानी चाहिए. I remember Pallav once told me that you are very much childlike. हाँ So at that time I took that as an offense कि शायद इनको नहीं पसंद होगा me being a childlike. But after a very long time recently he told me that that is what I like about you. दैट इज So that हाँ मैं लगनी मतलब हाँ वो अच्छी चीज़ होती है लोग कैरी नहीं कर पाते बचपन ऐसा बहुत मुश्किल है मतलब इतने सारे हादसे हो जाते हैं लाइफ लोग स्ट्रगल करते हैं दे जस्ट फॉरगेट व्हाट दे वर एक्चुअली हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो एंड आई आल्सो सी दैट इन यू. So yeah, we are here to basically share our experience of what we learned about filmmaking. He hasn't worked as closely as I have worked on filmmaking, but I'm sure he has his take on filmmaking, and I would love to hear his take, and I want him to share his take on what is filmmaking for him. And yeah, basically we'll just discuss about what the process is of filmmaking, and I think I've used the word filmmaking a lot, so I'm just going to be more conscious about that. ओके सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है ना कोई भी एक मूवी बनाने का या टीवी शो व्हाटएवर यू कॉल इट और शॉर्ट फिल्म सो इफ आई हैव टू पुट इट डाउन इन स्टेजेस इट इज ऑफ इट्स अ 3-stage process. First one is pre-production, second one being production, and the third one being post-production. Now when I say these 3 stages it is like एकदम ऊपर से कि भाई 3 स्टेज है जैसे कि कोई भी स्टोरी में 3 एक्ट होते हैं विच आई डोंट नो इफ यू गाइस वुड रिलेट टू पर ऐसा 3 स्टेज है कि भाई एक चीज हो गई अब दूसरी चीज और तीसरी चीज ठीक है उसमें सबसे इजी जो मेरे को लगा ना इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस को फेस करना तो मेरे को प्रोडक्शन लगता है कि सबसे इजी है क्यों मैं बताऊंगा तेरे को आगे बताता हूँ बट ऐसा कम वर्ड में बताऊं तो उसमें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो फेज होता है ना वो कम होता है हाँ, फटाफट निकलती चीजें बिकॉज़ जैसे कि प्री प्रोडक्शन में तुमको एक ब्लैंक कैनवस दे देते हो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आता होगा सो और पोस्ट प्रोडक्शन में तुमको भाई ये है हाँ लेकिन आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन इज मोर अबाउट पेशेंस ऐसा मतलब बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए बिकॉज मतलब तूने जितनी बार मूवीज देखी आई डोंट नो कितना काउंट हो गया होगा तेरा मूवी देखने का काउंट इट मस्ट बी मोर देन आई डोंट नो हेलो I'm sorry, I have to pick this. Hello. Yes, girl. I'm in the middle of the podcast. Okay, bye. Okay, I'm so sorry. Okay. We was talking about. I was talking about. I forgot. ठीक है. So हाँ क्यों post production difficult है या easy है? हाँ. What do you think? हाँ पेशेंस जो थर्ड स्टेज है मुझे वो थोड़ा सा ऐसा बोरिंग नहीं है इट्स मोर लाइक पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए और यू कैन बी लॉस्ट इन दैट फेज ऐसा तुम भूल जाओगे खो जाओगे बेसिकली तो गेन करना वापस कि यही करना है इस टाइमलाइन पे रहना ये करना है आई डोंट नो टाइमलाइन बट एज अ मूवी का जो थॉट रहता है ना इनिशियल लेवल पे वो चला जाता है मेरे हिसाब से ऐसा बट इजीएस्ट पार्ट इज प्रोडक्शन और हार्ड वर्किंग पार्ट इज प्रोडक्शन ऐसा सबसे हार्ड वर्किंग या पर हाँ बट देन आई वांट टू क्लैरिफाई कि व्हाट इजी मींस एंड व्हाट हार्ड वर्किंग मींस ऐसा नहीं है कि तुमको बाकी सब मतलब इजी और हार्ड वर्किंग ऐसे दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तू बोल रहा है एक जगह बोल रहा है इजी भी और एक जगह बोल रहा है हार्ड वर्किंग भी है हार्ड वर्किंग इन द सेंस कि तुमको अभी है ना यू आर जस्ट हैंड्स you are less on thoughts or less on brains less creative but you're more on your actions कि भाई 1+1 तुमने कर लिया है अभी तुमको सिर्फ 2 देना है so it's just कि भाई तुमने प्लान कर दिया है अब सिर्फ एग्जीक्यूट करना है so it's just the execution part which is the production so when I talk about planning so let's just talk in details I've jotted down a few titles that we're going to mention सो प्री प्रोडक्शन में बेसिकली सबसे पहला तो स्क्रिप्ट होता है कि बंदा द वन इज राइटिंग और क्रिएटेड उसका थॉट क्या है तो स्क्रिप्टिंग होता है सो बेसिकली इट्स डेवलपिंग ऑफ स्क्रिप्ट सो उसमें भी इफ आई हैव टू क्विक ओवरव्यू बिकॉज वी कैन टॉक फॉर एवर सो व्हाट विल डू इज इफ यू गाइज अलाउ अस और इफ यू गाइज वांट डू कमेंट डाउन इफ यू वांट दिस कि कोई एक टॉपिक जैसे कि डेवलपिंग ऑफ स्क्रिप्ट इस पे इफ यू गाइज वुड वांट टू
नो मोर कि उसमें भी क्या सारी चीज़ें होती है कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बंदे, what problems I face that I can only share, and I don't have a lot of experience but I can just share whatever I have faced problems, also how we tackled the problems. Yes, फिर एक शेयर कर देना, कोई हाँ, कोई तो एक ऐसा- छोटा सा शेयर करके एग्जांपल दे दे छोटा. So basically ऐसा हुआ था कि अमन के when Pallav was writing the script, he showed the script after he was done with the first half of the movie, and after that he was quite blank, and then I think Pallav would be more he would be more like वो अगर समझेंगे तो शायद हम ज़्यादा समझेंगे, बट Okay, next podcast में yeah, next podcast we will try to involve him as well. So yeah, he'll be explaining more. बट हाँ, बेसिकली ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं कि बंदा अब हम यहाँ से कहाँ जाए, क्योंकि हर एक स्टोरी में क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम होता है, हाँ. फिर वो बंदा प्रॉब्लम फेस करता है, फिर उसका solution निकालना होता है. सो इट इज लाइक और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कहीं ना हाँ, कहीं विद द सोल्यूशन आल्सो. सो हाँ, हमारे पास प्रॉब्लम था, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अब कहाँ जाना है. सो दैट वाज बेसिकली द प्रॉब्लम. Yes. So we create a problem first and the problem is called script. Then we go on the ground and solve that problem. Oh my god. या सो बेसिकली एक बार स्क्रिप्ट डेवलप हो जाए तो उसके बाद कास्टिंग होती है कि अब तुम्हारे पास ये कैरेक्टर्स है और ये लोकेशन पे शूट होगा. सो सबसे पहले अब कैरेक्टर्स है तो अब ये कैरेक्टर को जस्टिफाई करने वाला कोई बंदा या बंदी चाहिए. Yes. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कास्टिंग. ठीक है. और उसमें भी यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि यू हैव टू जज फ्रॉम जस्ट या तो उनके प्रीवियस वर्क पे उनको जज करना है कि ये कर सकता है कि नहीं, या तो फिर उनसे तुम ये लोग क्या बोलते हैं Interview. वो that's a video basically. हाँ हाँ Audition. ऑडिशन हो मैं हाँ. सो ऑडिशन लो, बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी मच ईजी फॉर द एक्टर्स टू गिव. क्योंकि ऐसा इट इज डिफिकल्ट कि तुम ऐसा इट इज जस्ट लाइक प्लेइंग T20. तुम टेस्ट मैच के लिए T20 खेल लो, T20 अच्छा खेले तो फिर भाई तुम टेस्ट में लोगे, ऐसा थोड़ी होता है. टेस्ट प्लेयर्स लाइक दे कैन नॉट बी जज्ड फ्रॉम T20. Not even T20, गली क्रिकेट. हाँ, कि तुमको एक ओवर मिलेगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि तुम टेस्ट मैच में खेलोगे कि नहीं. Exactly. गेम ही अलग है ना. नहीं कर सकता कोई, जज ही नहीं कर सकता. मतलब it's very hard. ऐसा एक्टर्स का ये पर्सपेक्टिव है उनका है कि भाई हमको इट इज नॉट इजी टू बी जज्ड ऑन जस्ट one video one स्मॉल क्लिप ऑफ द स्क्रिप्ट. उनको ही जज करना है कि ये कैरेक्टर कैसे होगा और उनको ही अपना एक देना है. सो या बेसिकली कास्टिंग होता है विच इज वेरी डिफिकल्ट. एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज इजी. फिर उसके बाद यू हैव टू असेंबल द क्रू. crew अलग Very important. Each and every part is important. When I say that this is very important, this is very important, I'm telling you this is a collaborative process and each and every part of this process is very much important. This is like an assembly, like you have to assemble things. ऐसा आके सब सही जगह बैठना चाहिए, otherwise this will fall down. This will fall down. And the person who has to handle all this is the director. Yes. He's supposed to handle all this. All the pressure he has to take. Yeah. कभी-कभी ऐसा होता भी है कि you know director is also blank, but then he cannot show that he is blank. Yes, he has to be like कुछ तो होना ही चाहिए बैकअप में. So yeah, you have to assemble the crew. Crew is basically who will shoot the film, who is the director of photography, who is going to be the cameraman. Basically cameraman वगैरह, he is the DOP who is good. Basically सब compartments होते हैं और उनके HODs, head of departments, he has to select कि you are going to be the head of department of the art that is going to be shown in the film. Then you are going to be person B is going to be the director. He is going to be the head of department of direction team. कि भाई you are going to assist the whole direction. Then you have to choose for a guy or girl for costumes that you are going to head the department for costumes. So basically ऐसे बहुत सारी चीजें होती है और you have to just assemble the crew and hopefully everything and everyone is in the same vibe and everyone सबको एक दूसरे बंदे पसंद आए, which does not usually happen. कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि वो ऊपर नीचे yes. But yeah, you have to deal with it and you have to move forward with it. Okay, इसमें ऐसा भी हुआ है कि हमारी मूवी में भी ऐसा हुआ है that not everyone was in agreement or in the same
page. But at the very end of the movie, everyone is hugging each other. Everyone is shaking their hands. Yeah. I and saw they that. they say that we will walk together again. That is Yes, what they yes. say. So ऐसा होता ही है. So it's basically like a small another family. You live in a family, you fight with them, but in the end you hug them. ऐसा like they are part of family. ऐसा हो जाता है. और it is magical. ऐसा तुम एक महीना एक ही बंदे का मुंह देख रहे हो हर दिन, और सिर्फ तुम ऐसा 4-5 घंटे सोने के लिए जाते हो घर पे. Literally. Yeah, man. You feel like it is a family. So basically मैंने मूवी मतलब मैं शूट वगैरह मैं इनके टीम में नहीं था, but I was like witnessing the whole thing. Yeah, I would love. So my to perspective for first movie for like shoot देखना ही was a major part of. और the best part क्या था पता है? कि तुम लोग first time movie shoot कर रहे थे. Everyone was learning. So yes, I was learning that thing. कि how to shoot a first film. Oh भाई. So that was my perspective. Okay. हाँ. So yeah, I love that part. ऐसा कि जैसे ये चीज़ आई उसको फोड़ना है, कैसे फोड़ोगे तुम, पता नहीं कैसे फोड़ोगे लेकिन फोड़ना है वैसा. तो you solve one problem at a time and you move ahead. ऐसा हो जाता है. It's not very hard. ऐसा दूर से भले दिखता हो, but when you step into the thing, you will move forward. I'm feeling a bit. So I'm just going to. Hot. So sorry about that. Yes. Almost done. Bear with me and we're done. Yes. हाँ मैं मेरे को तो मतलब मेरे को हर बार सुनना ही था, लेकिन अपना एक डिस्कशन हुआ. मैंने बोला था कि हाँ करेंगे बात ऐसे इसके ऊपर, बट हाँ वो फ्रेश माइंड उस टाइम अलग था, अभी थोड़ा सा डगमग हो गया है. हाँ बीच में. पर तेरे को तो मतलब हाँ ऐसा मेरा ही फेस देख के तेरे को तो ऐसा होता कि भाई ये क्या कर रहा है बंदा, और मेरी हालत तो बहुत ही खराब थी. ऐसा दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एवर वर्किंग ऑन अ फिल्म एंड आई वाज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर. Now what the job of assistant director is, I'll tell you in just very few words, that he has to schedule everything. Schedule in the sense कि तुमको 90 पेज 100 पेज की स्क्रिप्ट दे दी गई है, ओके, एंड यू हैव टू शेड्यूल कि भी कितने दिन का शूट होगा और कहाँ पर शूट होगा और कौन कौन कैरेक्टर्स को यहाँ पर बुलाएंगे और ओके, ये एक प्रेशर ये भी होता है प्रोड्यूसर के एंड से. ओके, सो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर तुम्हारा एक पाँव डायरेक्शन टीम में होता है और एक पाव प्रोडक्शन टीम में होता है. डायरेक्टर को XYZ चीजें चाहिए होती है और प्रोड्यूसर को ABC चीजें चाहिए होती है. अलग चीजें चाहिए होती है. ओके, नंबर्स इन अल्फाबेट्स. और तुमको दोनों ऐसे बीच में तीन लाइन में चलना है और तुमको देना कि ये लो करो फोड़ो. और मैंने देखा है मतलब when you used to fumble, वो भी देखा है मैंने सर, किसी को पता नहीं होता था कि यहाँ पे डगमगा गया है, स्मूथली निकल जाता था. बट दैट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, यही करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता तुम्हारे पास. ऐसा टाइमलाइन इतना टाइट होता है, यहाँ से कोई छीन रहा है, यहाँ से कोई छीन रहा है. बट मैं एक बात पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया जो मैं सीखना भी चाहता हूँ कि मैं ना आई वॉज लाइक वेरी गुड टू पीपल एंड आई एम नेचुरली गुड टू पीपल. यू आर गुड टू पीपल. पर ऐसा है कि यू हैव टू लाइक गेट योर शिट डन, यू नो. कि तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसा वाला सीन है. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी पर्सनली टू नॉट बी गुड, बट आई ऑलवेज वुड ट्राई टू बी गुड एंड और मेरा काम भी निकल जाए. ऐसा मतलब मैंने तो देखा है कि यू आर वेरी गुड. मैं तेरी जगह लिटरली मैं पेशेंस लूज कर जाता है. मुझे कहना नहीं, बट लाइटिंग के कुछ मेंबर्स आई डिडंट लाइक देम. ऐसा मैं तो डायरेक्टली सब कुछ बोल ही देता हूँ उनको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी. बट था. But yeah, so yeah, if you once you have assembled the crew, then comes the scouting of locations. Okay, so locations, you know कि ऐसी बहुत सारी locations होती है कोई भी फिल्म में. If you have noticed, तो there are n number of locations. So when I'm making schedule, so उसके बाद locations you have to jot down कि भाई location A, location B, location C, location D. ठीक है. तो अब ऐसा नहीं होता है कि मूवी के स्टार्ट में तुम एक घर में हो और मूवी के एंड में तुम सेम घर का सीन है तो तुम 2 बार आ जाओ उस सेम लोकेशन पे. दैट डजंट हैपन. यू हैव टू सेव मनी हियर. सो व्हेन यू आर एट द लोकेशन ए, तुमको ये सीन स्टार्टिंग वाला और आखिरी वाला सीन दोनों साथ में शूट करना है. So that is how you save money and save time. You don't have to like go back and forth at the same location.
सो ऐसा ही होता है कि एक बार तुमको लोकेशन मिल जाए, सो हाँ वो स्काउट करनी पड़ती है, तुमको वो लोकेशन पसंद है, जैसे कि लेट्स सपोज इफ आई हैव अ सीन ऑफ अ वेयर हाउस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑरा, ऐसा है उसका एनवायरनमेंट है पर्टिकुलर वेयर हाउस का, तो मेरे को वो वेयर हाउस ढूंढने जाना पड़ेगा। या तो मेरे को वेयर हाउस मिलेगा, बहुत मेहनत के बाद अगर नहीं मिला तो मेरे को डिसाइड करना है, मेरे को मतलब डायरेक्टर को डिसाइड करना है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ यहाँ पर कि मैं और ढूंढूं। ठीक है, टाइमलाइन भी बचानी, टाइमलाइन भी money बचानी was- होती है, हाँ, हाँ। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, इट इज बाय फार आई फील एंड आई रेड इट समवेयर दैट फिल्म मेकिंग इज लाइक द कॉस्टलीस्ट आर्ट। हाँ, सबसे महंगा आर्ट है, यू नो लाइक इफ यू आर अ पेंटर यू कैन बाय, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ आई डोंट नो व्हाट द डिटेल्स आर के भी इतने महंगे पेंट्स होते हैं, बट इफ यू वांट टू पेंट यू कैन जस्ट बाय अ फ्यू कलर्स। इट्स द सेम विद फिल्म मेकिंग एज वेल, you can make amazing things with very less amount of money. We have done a lot of things with no budget. yes. But yeah, if you have to like go big, like filmmaking is very expensive art, and yeah, it comes with a lot of responsibilities if you are doing this. So एक बार location scout हो जाए, then you have to work on budgeting. ओके, सो ये प्री प्रोडक्शन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि तुम्हारे पास स्क्रिप्ट है, तुम्हारे पास कैरेक्टर्स है, तुम्हारे पास लोकेशंस है, अब तुम्हारा बजट कितना है। अब तुम्हारा बजट लेट सपोज 1 करोड़ है, देन यू कैन नॉट अफोर्ड कि भाई मैं सलमान खान को ले लूँ, है ना, तो फिर तुमको वापस जाना पड़ता है कि भाई अब मैंने तो सलमान खान को सिलेक्ट किया था, मेरा तो बजट इतना है, तो अब मैं क्या करूँ। सो हाँ, इफ यू देन यू हैव टू गो बैक कि भाई अब मैं ज़्यादा पैसे इकट्ठा करूँ, वो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, कि तुम्हारा ये बजट है तो भाई अब इसमें ही बनाना है, तो देन यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली कि मेरे को ये कैरेक्टर मेरे बजट में आता है, ये लोकेशन मेरे बजट में आती है, ये अमाउंट ऑफ आर्ट मेरे बजट में आता है कि मेरे को कितना खर्चा करना है। सो बेसिकली इट्स अ जॉब ऑफ डायरेक्टर कि भाई मैं इतना पैसे यहाँ पर इवैल्यूएट कर सकता हूँ और क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि लेट्स सपोज इफ यू हैव टू मेक एन अमेजिंग आर्ट कि बहुत बड़ा सेट है और वो स्टोरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं। सो हाँ, दैट इज वेयर बजटिंग कम्स, और बजटिंग इज इट वर्क्स इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि बजटिंग में क्या होता है कि पूरे दिन को अगर मैं जॉट डाउन करूँ तो सुबह से कॉल टाइम लगता है कोई भी डे का, तो उस टाइम पे सब आ जाते हैं कि लेट सपोज 6 बजे का कॉल टाइम है, तो यू हैव टू गिव देम ब्रेकफास्ट या लेट सपोज कि तुम्हारा अगर दिन का पैकअप हो रहा है 10 बजे, यू हैव टू गिव देम 9 बजे का डिनर, राइट। सो इट ऑल काउंट्स इन द बजट, every penny, every small thing counts in the budget. The petrol, the transportation, lot of more. क्रू को पैसे देना, वेरी बहुत डिटेल में है, which we hope that we can discuss this later in detail. You guys let us know if you want to know more in detail. We can make like एक पॉडकास्ट तो पूरा सिर्फ बजटिंग भी होगा, एक पॉडकास्ट पूरा सिर्फ स्टोरी बोर्डिंग पे होगा। स्टोरी बोर्डिंग इज अनदर प्रोसेस where you have to like decide the frames, like you sketch the frames before shooting them. हाँ, right, that's right. So एक तुम्हारे पास सीन है कि बंदा if a guy is walking, बस तो walk कैसे लेना है, how to shoot the walk. There are n number of ways that there are different angles. Which angle are you going to choose? You have to be specific. You cannot go blindly कि भाई हाँ देख लेंगे, वॉक ही तो शूट करनी है। बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, अगर बैकग्राउंड में किसी और का पासिंग है वो भी दिखना चाहिए। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इज इट गोइंग टू कंटिन्यू इन सम अनदर पार्ट ऑफ द मूवी, वो सब कुछ होता है, कुछ ना कुछ एवरीथिंग शुड मेक सेंस। ऐसा नहीं है कि भाई वॉक ही लेना है ना, कहीं से भी वॉक करवा देंगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू हैव टू शो दैट पर्सन is a bit afraid, then there is a particular kind of walk. Yes. If you have to show that that person is confident, then there is a particular kind of frame that is set कि भाई मेरे को इस तरह से ही दिखाना है इस बंदे को walk. So that is where storyboarding helps, and it makes very much the execution part easier. The production जब होता है, if you are at that particular scene and if you are shooting and if you have a list of storyboard ready, so you know what exactly you have to shoot, and it becomes very easy if you are done with the storyboarding. Okay, moving on, then comes the production part. Now you have done the budgeting,
you have your schedule ready, you have your characters ready, you have the cast ready, you have your locations. Now एक बार शेड्यूल बन गया ना, then सब पूरा शेड्यूल इज बेसिकली द टाइम टेबल कि भाई तेरे को इस तारीख को इस जगह जाना है, ये सीन शूट करना है, ये कैरेक्टर्स आएंगे, दैट्स इट. अब तुम्हारा एग्जीक्यूशन पे जाता है. एग्जीक्यूशन प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ना वर्कशॉप लगता है. वर्कशॉप में बेसिकली क्या होता है कि यू आर रिहर्सिंग. हाँ, रिहर्सल, यू कैन कॉल इट एज अ रिहर्सल. इट इज लाइक एक प्रोसेस है जहाँ पर डायरेक्टर सिट्स विद द एक्टर्स और वो समझाता है कि इस सीन में व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. सो इट हेल्प्स कि यू आर नॉट गोइंग ब्लाइंडली कि भाई ओ आज तो ये शूट है, इसमें करना क्या है सर. बेसिकली ही गिव्स यू अ थॉट कि इस थॉट पे वर्क करना है तुम्हें ऐसा. राइट. तो दैट इज वो वर्कशॉप हमारी मूवी में 4 दिन चला था, विच वी ट्राइड टू रेप्लिकेट दैट दिस विल बी द काइंड ऑफ कैमरा एंगल दैट विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर सीन. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू रेप्लिकेट दैट फॉर नाउ एंड देन बिकॉज इट इज सो हमने सारे सीन्स नहीं किए थे, just the difficult parts, like just to give you an example, there was a scene with दो characters थे and the camera is following them walking and then it like comes forward, ऐसे आगे आ जाता है and then the cameraman our DOP Bhavesh he had to like walk backwards ऐसे. So it was very difficult. So Bhavesh had to like practice it a lot and so the actors as well, they had to practice it a lot. So we just wanted to make sure that we are very much ready before we go on floor, right? So ऐसी बहुत सारी difficult phrase. So it's like dancing, like you have to choreograph the whole thing. That's a nice way to put it, but yeah, it is like dancing. Yeah, then the production part comes, man. It is सबसे easy होता है in terms of your creative the creative process that you have to go through. ज़्यादा you don't have to be more creative in that, but it's just hands on कि भाई बस ये shoot करना है. Oh, we have you know what you have to do this, right? डायरेक्टर का काम तब इतना ही होता है कि he just has to remind it. So this is the scene, this is what your thought process is, and this is what you're acting. So yeah, क्योंकि I'll tell you, in filmmaking, whenever you're shooting a film, continuation में नहीं होता है कि वो scene 1 है, अब scene 2, scene 3, that doesn't happen. क्योंकि we are at one location, तो यहाँ पर इस लोकेशन की सारी पूरी स्क्रिप्ट के जो भी पार्ट्स होंगे वो शूट करना है. तो डायरेक्टर हैज टू मेक श्योर दैट द एक्टर इज गिविंग द बेस्ट व्हाट डू यू कॉल इट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ के जो इमोशन है, क्योंकि सब इसमें ना इमोशन इज लाइक द फर्स्ट थिंग, सबसे प्रायर इमोशंस होते हैं. तो ही हैज टू गेट द स्पेसिफिक एंड द राइट type of emotion out from the actor, and he has to make sure कि भाई हाँ तू यही है. So he has to keep a check on that. And it is very difficult. It doesn't sound as easy as it comes out of my mouth. So yeah, that is the main job of the director on the phase of production. For me it was the most difficult, by the way. Like he did it brilliantly. Oh yeah, मतलब अगर बताऊँ मैं exactly क्या किया था, तो schedule तो it was, I would call it easy now. At that time when I was scheduling, I thought like what the fuck is this? क्या है ये? Because it was very difficult. Like there is no particular timeline to it कि ये shot इतनी देर में हो जाएगा, कितने takes जाएंगे, you can never judge ऐसा. मतलब फिर after some point इतना काम कर लिया, 7 दिन 8 दिन हो गए, then I think second week में you get to know कि इतना time इस चीज में लगने वाला है, then you get to know कि director को इतना time इसमें लगेगा ऐसा. As an assistant director, I don't know मतलब बाकी लोग क्या सोचते हैं, but हाँ ऐसा perspective होना चाहिए, हो जाता होगा. So at the time of pre-production, when I sat down with the director, with Pallav, that we are making schedule. So fortunately or unfortunately, he is the producer as well. So मेरे को ये तो फटाफट director's head, producer's head, director's head, producer's head. अब मैं बीच में पिस जाता था कि भाई क्यों बताता हूँ मैं, because क्या हुआ कि I would make a schedule. This was my first project, so I don't know कि exactly इस shot को कितना time लगेगा, right? But I used to give my best guess of what I thought practically would
take this shot X amount of time, but then the producer's head of Palla would tell me कि ओ नहीं हमको इतने में shoot करना ही पड़ेगा, and I have to like cramp it up कि हाँ we can try, but then I had to keep a buffer time कि भाई ये इतने time में shoot नहीं हुआ तो फिर मैं इसको कहाँ place करूँगा, which I did have to do of every day real time में changes करता था when I was on the set कि भाई ये सीन तो शूट नहीं होगा, because at the very beginning of the day I would come to know कि भाई आज इतना हेक्टिक दिन होने वाला है और शेड्यूल हमने बनाया था इतने सीन्स का और अब तो ये सीन शूट ही नहीं होगा, तो ये सीन को मेरे को डालने का कहाँ होगा क्योंकि मेरे फॉलोइंग डेज भी पैक्ड थे, जैम पैक्ड थे, नहीं हो पाता था. सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि हमारे नंबर ऑफ डेज बढ़ते गए एंड बजट भी फिर बढ़ते गया, सो दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि हार्डली कोई मूवी होगी जो पर्टिकुलर बजट के अंदर मूवी बन जाती होगी, इसलिए हाँ कोई मूवी नहीं बनती होगी, कोई नहीं होता होगा. इट्स अ क्रिएटिव थिंग, यू ऑलवेज पुट, मतलब डालना ही पड़ेगा पैसा, ऐसा है, यू कांट गो बियॉन्ड दिस. हाँ मतलब या तो कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते, देन व्हाई आर यू मेकिंग अ मूवी. कितना देयर इज अ पर्टिकुलर परसेंटेज, मैंने कहीं तो सुना भी है, पढ़ा भी है कि इतना ही परसेंटेज तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, 30% तुम कॉम्प्रोमाइज करो देन इट्स अ गुड मूवी. 60% से नीचे जा रहे हो, 50% टच कर लिया तो देन जस्ट स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग, ऐसा दिस इज द लिमिट टू इट. या सो इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रोडक्शन जो फेज है, इफ आई हैव टू टॉक इन स्पेसिफिक द प्रोडक्शन फेज, it's not just about just shooting, it's about managing all the taking a call at real time. अब बीच लेना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं सोचने का. and you have to like manage a lot of logistics as well. क्योंकि क्या होता है कि like there are different, as I told you earlier, there are different departments. There is costume department, then there is art department, then there is camera department, then there is lighting department. So you have to keep a check on everyone कि everyone is working in sync. If कोई एक भी बंदा late या आगे पीछे हुआ, then the whole process is going to like fall down, and then the assistant director is going to क्योंकि मेरे को वापस वो सीन कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा शेड्यूल में जो पहले से जैम पैक्ड है. So yeah, basically you have to be in sync. ऐसा नहीं है कि just me, only me is going to suffer. The actors will suffer क्योंकि they also have like a thought process, क्योंकि it is very much difficult, क्योंकि उनको mind, उनको भी वक्त हो गया, they need some time to get there कि भाई हाँ ये होने वाला है, and if that doesn't happen then it becomes difficult for them to like survive that blow. So yeah, it is a very much difficult part as well. You have to manage a lot of logistics. Yeah. And फिर what do we talk about? Yeah, that's pretty much all about production. Yes, like production. we can talk a very. There's a lot of things we can talk whole day, but yeah, you just. But for now, like just to give you an overview, and I hope you feel blown away of what exactly the production is. It is, I'm telling you, it is not just shooting. It's not just action and cut. There's a lot of things that happen between action and cut. So yeah, I just want you all guys to know that. And then the next stage comes post-production. Oh boy, post-production. I remember वसन बाला का भी राउंड द टेबल वाला थॉट. क्या हुआ था? कि फर्स्ट एडिट पे क्या थॉट आता है आफ्टर द फर्स्ट एडिट कम्स आउट, हैव टू स्लिट माय ब्रेस्ट. तो समझ जाता भाई, सही वैसे ही होता होगा. Okay, so basically just to let you guys know, post production में सबसे पहला स्टेज होता है post production. Of course there are a lot of stage. So post production इंसेप्शन वाला भाई, ओ नोलन बाबू. सबसे पहले तो एडिटिंग होता है. अब एडिटिंग में भी स्टेजेस हैं, तो मैं फटाफट जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू. तो एडिटिंग में क्या होता है कि जितने भी शॉट्स तुमने शूट किए हैं तो उसका शॉर्ट लिस्ट होता है कि भाई ये शॉट हमको अच्छा लगा था या ये शॉट हमको थोड़ा कम अच्छा लगा था, जिसमें से कुछ और यूज कर सकते हैं. एंड इट्स द जॉब ऑफ एडिटर कि डायरेक्टर्स विजन एंड द शॉट्स यू हैव, इन दोनों को मैच करने का ट्राई करना है एज मच एज यू कैन मैच. फिर देन द एडिटर वर्क्स ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ट्राई टू cut the first draft of the movie. Okay, this is like what I think the movie is looking
according to your vision and according to my skill set. ठीक है. अब most of the times director doesn't like what he sees, as you told. So yeah, but then it is like a never-ending process between the director and the editor to like get the product as close to the vision of the director as possible. So ये process होता है and it goes forever. There's a term called patchwork जो forever चलते रहता है. मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि भाई मूवी रिलीज होगी ना वो दिन तक मैं ऐसा पैचवर्क ही करते रहूँगा. I haven't edited the film. Bhagyashri, if you're watching this, hello, you're doing a great job. I love you. And yeah, she's the editor of our film, and she has done a great job. She has done a fabulous job, and I love her work. And she has done a lot of work, other work as well, and I hope you guys see it. I don't know how you will see it, but beautiful Bhagyashri, if you're watching this, I love you. So yeah, she's the editor, and she's the one who made the first draft. Then okay, so initially हमारा plan ऐसा था कि we will live edit the movie, which was a very difficult task. I saw that thing. मतलब I really? Yes. मैं तो ऐसा like सारे पत्ते एक साथ फेंक रहे थे. So basically confidence एक होता है, फिर एक over confidence, फिर over confidence. But I was like कि ऐसा possible होगा भी क्या? मतलब मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट टाइम कोई मूवी शूट कर रहा है और पैरेलल एडिट हो सकता है ऐसा. सो मैंने रिसर्च भी किया ऐसा कि कोई करता है क्या, और मुझे मिले कि लोग करते हैं ऐसा. बट अगेन जैसा कि स्मॉल एडिट करते हैं. उनका होमवर्क कैसा होगा? लाइक गंदा, मतलब देवर एक्सपीरियंस, जैसे जिनका मैंने वीडियो देखा, दिस वाज नॉट कि फर्स्ट मूवी में तुम ऐसा कर पा रहे हो. मे बी या तो उनकी या तो ऐसा था कि एडिटिंग टीम ही अलग होगी जो प्रॉपर्ली बैठी हुई है, बैठ के कर रही है, और वो टीम होगी. एक बंदा एक बंदी नहीं होगी, एक बंदा एक बंदी नहीं होगी. तो वो चीज़ देख के मेरे को थोड़ी हंसी आई थी ऐसा कि, बट आई थिंक दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट. ऐसा इनिशियली तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को ऐसा कि अगर, और इनिशियली 3 days आई थिंक पॉसिबिलिटी 4 दिन हमने ट्राई किया था, विच वाज गुड इनफ. ऐसा मिल रहा था कुछ ना कुछ. सो हमको तब पता चल रहा था कि क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है. बट एज टाइम जैसे जैसे वी went in production, 4-5 दिन होने लगे, it became a very much difficult to handle all the other logistics. और हमारा मेजर मैन पावर पूरा वहाँ अदर लॉजिस्टिक्स में जाता था, एंड वी हैड टू डाइवर्ट फ्रॉम एडिटिंग. और अगेन we couldn't have like a large team because of budget constraints. So we had to divert our editing team, if you want to call it, to other stuff. We had to shift it because that was not that important. But yeah, eventually we stopped live editing, and then we went on to edit the movie after we completed the production. And yeah, it is still going on. फिर हाँ, एडिटिंग के बाद होता है कलर ग्रेड. सो कलर ग्रेड, ओके, व्हाट इज कलर ग्रेड? इफ आई हैव टू टेल यू, ब्लैक एंड वाइट वुड बी द मोस्ट लेमन टर्म इफ आई हैव टू गिव यू, कि ब्लैक एंड वाइट में मूवी शूट होती है एंड देन इट इज गिवन कलर. क्यों? क्योंकि कैसे बताऊं? If you, I think so you can basically explain there are shades of colors, and you don't know which particular shade you will like in that color. Suppose this is, I don't know, I think you are seeing this red, I guess. But अगर मेरे को थोड़ा सा इसका टोन चेंज करना है, what do you so there are different shades in red also. So which tone is going to perfectly match the feel of the scene. Yes, give the value to that particular scene. So color grading is basically that only, कि कलर टोन पसंद आना चाहिए. ओवरऑल फील क्या रहेगा पूरी मूवी का, कि सपोज ऐसा एक ग्लूमी सा वेदर है, पूरी मूवी अगर इट्स अबाउट ग्लूमी थिंग, सो हमेशा ड्रीमी फील देना, तो ग्लो होंगी थिंग्स उसके अंदर. कुछ भी शार्प नहीं रहेगा इतना, कुछ कलर इतने शार्प नहीं रहेंगे, थोड़े से डल शेड रहेगा उनका. सपोज इट्स अ सनी डे, तब सब ब्राइट दिखना चाहिए, सब कुछ ऐसा लाइव होना चाहिए, ऐसे खुश ऐसा. So basically color grading is about giving a feel to a scene. So I want you guys to, whenever you watch films, I want you guys to like go in this much detail, because I'm not going to talk on behalf of every filmmaker, but then most of the filmmakers, they get into this much detail, like मेरे को ये red color नहीं चाहिए, मेरे को ये light red चाहिए.
एंड देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग कि ये टोन चाहिए मेरे को इस मूवी का, ये फील चाहिए. इफ यू डोंट फील ड्रीमी अबाउट इन अ फिल्म, इफ यू आर वाचिंग ऑफ अ ड्रीमी मूवी, अगर तुमको ड्रीमी फील ही नहीं हो रहा है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट. यस. सो या ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. सो ट्राई टू, मेरे हिसाब से मैंने नहीं बनाई मूवीज, बट आई वांट टू डू दिस. मैं अब करूँगा तो यही करूँगा कि जो मेरे दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन है, जस्ट ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमेजिनेशन. हाँ, सो वो एडिटिंग में हो सकता है इमेजिनेशन के अंदर, बिकॉज देर इज अ टोन टू इन योर हेड कि ऐसा टोन होता मेरे दिमाग में, और वो मैं पिक्चर टोन से ही ला सकता हूँ. ऐसा है. कंपोजिशन वो सब है उस चीज़ में, आई एग्री विद दैट. बट हाँ, टोन एक ऐसा चीज़ है कि इमेजिनेशन के क्लोज वही ले जाते हैं. बट आई फील के पोस्ट प्रोडक्शन में तुम कर सकते हो. आई अग्री 90% चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन में ही होती. बट पोस्ट प्रोडक्शन में भी अगर तुमको ये जस्टिफाई करना है, तो देन इवन योर चॉइस ऑफ लेंस. हाँ, अग्री. लेंस तो बहुत सॉरी, मतलब लेंस बहुत सारी चीजें मैटर करेंगे उससे पहले. कमिंग टू अगेन नॉट जस्ट लेंस, बहुत सारी चीजें. हाँ. सो या even one tree in the background, one pot in the background, flower pot in the background, anything. There's small things which will make you feel dreamy about it. So it's बहुत कुछ है बताने को. I don't know where to go now. Okay, then let's jump on to the next topic. Special effects. So yeah, if the film requires any special effects, don't compromise on special effects. Never compromise on special. ये तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया. Like this was the very much हाँ फर्स्ट टाइम ही था, लाइक एज अ डायरेक्टर फॉर पल्लव, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर मी, एंड आई थिंक प्रीटी मच एवरीवन वर्किंग ऑन द फिल्म, इट वाज लाइक द वेरी फर्स्ट टाइम मेकिंग द फिल्म. आई वुड ऑलवेज फियर दिस थिंग कि मतलब पल्लव ने पता नहीं कैसे कर लिया कि फर्स्ट फिल्म बनाए और वीएफएक्स करना है पल्लव को. मैं फर्स्ट फिल्म बनाता, आई वुड स्क्रिप्ट ही चेंज कर देता मैं तो, या तो स्क्रिप्ट में ऐसा रखते हैं नहीं कि वीएफएक्स का इन्वॉल्वमेंट हो. मतलब मेजर पार्ट में इन्वॉल्वमेंट था उनका, ऐसा मेरे को दिख रहा है. मेजर रीजन के हाँ था 30%, पर उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा. हाँ अग्री. भले वो सीन कम थे या ज्यादा थे, इम्पोर्टेंस था, बट अग्री. लेकिन मैं स्क्रिप्ट में डालता ही नहीं. मतलब मेरे में इतने गट्स नहीं है बेसिकली कि मैं वो चीज़ फर्स्ट गेम में खेल जाए. ऐसा मे बी थर्ड सेकंड राउंड फोर्थ राउंड में आई विल ट्राई दैट ऐसा, बट फर्स्ट टाइम में तो नो आई वोंट ट्राई दैट. But yeah, special effects is basically VFX, green screen, if you want to hear the layman word for it. और why? Okay, so there are some things के जो तुम नहीं दिखा पाते in reality, जो तुमको, let's suppose if you wanna like show 1,000 people with the same foot, how would you do that? I think that's a bad example. It's okay. Oh boy. But ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है स्क्रिप्ट में जो तुम इन रियलिटी नहीं दिखा सकते. सो दैट इज व्हेन विजुअल इफेक्ट्स हेल्प्स, एंड या दैट एज वेल. सो या Ami is calling. Then comes after VFX, let's talk about sound designing. It is yet another very much important part. And I love that part. Alog layer they did that, boss, next level. It it gives you reality. So I'll talk about my movie. So and I say there were many stages in the film, इस movie में, कि when I felt that kick, वो किक नहीं बोलते. सो वो पहली किक मेरे को तब लगी थी जब स्क्रिप्ट रेडी हो गई थी, लाइक इट वाज लाइक जैम पैक्ड कि ओ बॉस क्या स्क्रिप्ट है. तो वो किक तब लगी थी. दूसरी किक मेरे को लगी थी ऐसा जब मैंने ट्रेलर काटा था. ओके. हाँ, सो वो जो किक थी वो मैं बता नहीं सकता. लाइक दैट वाज लाइक कि हाँ बॉस, इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ जो मैं, दिस इज व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. So and the recent kick was when I watched the whole movie. अब VFX हो गया है, color grade हो गया है, you've done editing it, crisp edit हो गया है, and the music is done as well. So like that was वो जो kick मिले ना मेरे को ऐसा पहली बार मूवी देख के, and the music that you have done. म्यूजिक में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है. इट्स फॉली इज बेसिकली if you are like ये मेरा phone है, and if I keep it on the desk, this makes a noise. But then if you are not capturing it live,
And if you're dubbing the movie, then you have to like actually replicate the noise of the phone keeping on the, like जब रखते हो then it makes a specific noise, so it's basically called foley. And then you have to dub the movie. Dubbing अलग से होता है, like you have to replicate the lips, कि भाई lips are saying in a specific way, तो उस specific way में ही तुमको again dub करना. You have to replicate the feeling as well, you have to replicate the emotion as well, and then the music, background music comes into effect, and then the songs. So yeah, this is like a very much collaborative process. Sound design भी एक अलग ही game है ऐसा. It give, like you can just play around with it as well, and it is another like art of storytelling. Yes. जितनी भी चीजें बोली है, like जितने भी parts है ना, it is filmmaking in itself. It is storytelling itself. Filmmaking is nothing but itself is an art form. You have to just basically tell your perspective, your story in your ground. in your ground. So basically it's like a what do you call that, baton pass करते हैं ना, after you run your round, you have to pass the baton to another person, then that another person is going to run the round. Relay जैसा होता है. And director and assistant director, they look after the race कि ये चल रहा है, इनको भगाना है. बस मतलब इतना सब हो जाए, then you have to just go back. इतना सब हो गया, then you have to go back to like the very much first stage, कि भाई हाँ अब सब हो गया ready, now let me watch the movie, and then you again see a few things, तो final touches जो होती but है. that will be like until the end of the I'm telling you, these final touches till you release the movie. Patchworks, this will never end until the day you just announce the film or release the film. So yeah, ऐसा भी हुआ है, like you have to give to censorship before you announce the movie or before you put it out to the world. So ऐसा भी हुआ है कि लोग 2-3 बार सेंसरशिप में डाल रहे हैं कि भाई ओ ये नहीं, ये वाला नया है, ये वाला नया है, और ऐसा final do not ever name your files final because they are not going to be final. Just name them version 1, version 2 and so on, and just select the last version. No, there is nothing like final. I think you can't even select the last version also. You will go back. इसके 2 पहले वाला अच्छा था. सच्ची है. So yeah, I think this is pretty much everything about the process of filmmaking. If we have to get in the psychology of filmmaking, what exactly is filmmaking, and I think we can discuss this in later podcasts. But I think this is like more very much for you for now, and I just want you to, like, if you can, go back to the very beginning and then watch this podcast, like listen to the podcast or watch this video again with a newer perspective, and then watch the movies that you've watched before with a newer perspective, and just try to concentrate and try to see what you can see differently. Try to figure out why this is here, why this is this way, right? So yeah, this is very much silent about it. It must be Ami only. Yeah. ठीक है, I think that's pretty much it, and this is the Spiral Project, and this is episode 2. I'm going to recommend this book. I think Brutant got this. Yeah. In the blink of an eye. It's a really good book for editors. I don't know, it's good book for anyone, I guess, but particularly for editors. Go through it. मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी है, but हाँ बहुत अच्छी book है. Done. Tata. Bye bye. Bye. See you in the next episode.